Hello everyone, welcome back to our class. So today we are doing one of the most important topics of our syllabus, that is fundamental rights. The single topic, you can expect nearly 4 to 5 questions from this particular topic, and I'll mark it as again the most important topic, and this lecture is one of the most important lecture of our session. So what are fundamental rights? We'll be discussing in today's class, the articles related to it and the part. So as I have told you, fundamental right is mentioned in part 3 of our Indian Constitution. It is mentioned in part 3 of our Indian Constitution. And it covers from Article 12 to Article 35 of our Indian Constitution. So now let's start with the fundamental rights. So what are fundamental rights? Very first thing that comes to our mind is that what are fundamental rights? See, fundamental rights are the basic rights that are guaranteed to us by the Constitution. Okay. There are some of the rights. If we are following a constitution, as constitution is what is the fundamental law of our land. What we say what constitution is, it is the fundamental law of our land. Okay, and this law guarantees us certain rights, so that is why we say them as fundamental rights. These are the basic rights that are necessary for a person's survival, that are necessary for every person or any organism. Okay, some of the basic rights that are necessary for our survival, it is given in where? It is given in the fundamental rights, that is in part 3 of our Indian Constitution. So now, from where we have adopted these rights? We have adopted these rights from US Constitution. From the Bills of Rights of United States of America, we have adopted fundamental rights. Okay. So as I have told you that Indian Constitution is what? Indian Constitution is a combination of a lot of words constitution. We took different particular things, different things from other constitution of the world, and from there we formulated our Indian Constitution. So fundamental rights, we took them from USA Bill of Rights. Okay. As we have fundamental rights in India, United States of America have Bill of Rights. So from there we took what? From there we took our fundamental rights. Now, second point over here, it is written as that they act as a negative obligation upon the state. How they act? They act as negative obligation. What is the meaning of negative obligation? Negative obligation. See, they act as a kind of restriction on the state. जैसे कि for example, whenever we have some certain rights, the state cannot violate them no matter what. Okay, state cannot take the life of any person अगर उसने कोई crime record उसका नहीं है या फिर उसने कोई criminal offense नहीं किया है. So they act as a negative obligation. वो state के ऊपर क्या है? एक तरह से restriction की तरह से act करती है. Now, just let me clear the screen, and it will be more clear to you people. Yeah. Next, they are considered as individual rights. Every individual enjoys the fundamental right. Every individual, whether it is citizen or foreigner. Okay. But over here, यहाँ पे, there is a difference. What difference is? All fundamental rights are not guaranteed to the foreigners. All fundamental rights are not guaranteed to the foreigners. Why so? Because certain rights are exclusively reserved for Indian citizens. जैसे कि we have Article 29. It is reserved for citizens. Article 15. It is reserved for citizens. Article 16. Public employment. It is reserved for citizens. So all rights, we cannot say that we cannot guarantee all the fundamental rights to foreigners. We can only guarantee some to the foreigners, and all are available to the Indian citizens. Okay. Next. Now, over here it is written that they are enforceable in the court of law. Enforceable in the court of law का मतलब क्या है? If your fundamental rights got violated, if fundamental rights get violated, then what? They are enforceable. You can go to court for it. Can go to the court for it. You can appeal in Supreme Court, High Court. ठीक है? So अगर fundamental rights आपकी किसी ने आपसे छीनी है, okay, then what? You can go to the court for it. Now, they are subject to reasonable restriction. उनके पास क्या है? They are subject to some
रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन. अब रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन का मतलब क्या है? आई हैव टोल्ड यू अर्लियर एज वेल. सी, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इज रिस्ट्रिक्शन जो गवर्नमेंट लगाती है या फिर जो भी हमारी गवर्नमेंट अथॉरिटीज है वो पुट अप करती है ड्यू टू सम ऑफ रीजंस. क्या रीजन हो सकता है? रीजंस कैन बी द सिक्योरिटी ऑफ नेशन. Okay, it can be the security of nation. So what we can say that fundamental rights, they are subjected to reasonable restriction. अब ऐसा नहीं है कि you are allowed to enter what Pakistan occupied Kashmir, okay, you can go, but it is not allowed. Why? Because it is subject to some reasonable restriction. But you can say कि भाई right to freedom जो है वो तो मेरा क्या है? Fundamental right है. I can go anywhere in the country. Okay, but similarly, if there is reasonable restriction, you are not allowed to go. Because the term reasonable restriction itself has a meaning. Okay, reasonable matlab reason, it has a reason for applying that restriction. So that's why we say that fundamental rights are subject to reasonable restriction. Next, if there is any Naxalite area, you cannot go to that place because of these reasonable restriction. Okay, अब आप ये बोलो मेरा फंडामेंटल राइट वायलेट होगा, it is not done. Because why? Because all the fundamental rights, they are subject to some of the reasonable restriction. और reason क्या है उनका? It can be the security and unity of the nation. Now, next point में यहाँ पे दिया है, Part 3 of Indian Constitution is described as Magna Carta of Indian Constitution. Okay, this point frames our question. This point frames our question. ये जो पार्ट 3 है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं? वी डिस्क्राइब इट एज द मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. व्हाई वी डिस्क्राइब पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज द मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? बिकॉज उसके अंदर बहुत सारे, इट हैज अ लॉन्ग लिस्ट, इट हैज अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ सर्टेन राइट्स. कुछ राइट्स की उसके पास एक बहुत लॉन्ग और एक कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट है. ओके, इस वजह से हम उसे एज अ मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब करते हैं, बिकॉज इट कंटेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन. मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन. सो यहाँ से स्ट्रेट अवे क्वेश्चन फॉर्म हो जाएगा, विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डिस्क्राइब एज द मैग्ना कार्टा ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, नाउ यू कैन फॉर्म द क्वेश्चन लाइक दिस. Which part is described as Magna Carta of Indian Constitution? Magna Carta of what? Magna Carta of Indian Constitution. Okay, and here are the answers. A is part A, part 1. B is part 2, citizenship. C states part 3, fundamental right, and D goes part 4, DPSP, directive principles of state policy. Then answer will be posted down in the comment. Now, next come, I have told you, we took it from where? We took it from Bills of Right, United States of America. तो हमने कहाँ से इंस्पिरेशन लिया है? Inspired from Bills of Right, United States of America. Okay. Now this can again be the question, this can again be other question. The question will be, question can come in such a manner, from which country India took fundamental rights or adopted, India adopted fundamental rights? Answers will be A, you will get United States, B, you will get UK, C, you will get Canada, and D, you will get France. So now, what will be the answer? Answer will be USA. Similarly, हमने पहले पढ़ा था LEF concept के बारे में, liberty, equality, fraternity. अगर वैसे क्वेश्चन आएगा, then answer will be French Constitution. Okay. Now, here one of the next important point here is, see, ये जो point यहाँ पे लिखे हैं ना, पॉइंट से आप क्या क्वेश्चन फॉर्मुलेट कर पा रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल, इट इज रिटन दैट द आइडिया पॉलिटिकल डेमोक्रेसी राइट्स हैं, क्या हमारे यहाँ पे क्या करते हैं?
They are promoting political democracy. Promoting political democracy. Okay. How they are promoting political democracy? See, we have given certain rights. Through fundamental rights, हमारे पास कुछ ऐसी particular rights हैं, which helps us what in achieving this political democracy. ठीक है. Similarly, when we talk about directive principle of state policy, जो कि बात करता है हमारा welfare state के बारे में, वहाँ पे we have socio-economic. So here we have fundamental rights do what? They help us in promoting political democracy. Whereas when we talk about what? When we talk about another thing, that is directive principle of state policy, it gives the notion about social and economic democracy. Okay. Now, here it is written that they are mentioned in part 3 of our Indian Constitution. Again, one of the questions. All these statements, just write them down and put a question after this. Put a Q over there so that you can remember it, that it's a question. Okay. So next is, कहाँ पे mention है वो? Part 3 में mention है हमारे Indian Constitution के. Now, over here it is written that the Constitution guarantees 6 fundamental rights to eligibility. Indian citizen को जो Constitution है वो 6 fundamental rights guarantee करता है. The very first, right to equality. Second one is right to freedom. Third one is right against exploitation. And fourth one is right to freedom of religion. Fifth is cultural and education right. And sixth is right to constitutional remedies. ये 6 rights हैं जो हमारा जो constitution है वो हमें guarantee करता है. अब इनके अंदर कुछ सब articles, सारी की सारी rights के अंदर कुछ further सब articles हैं. जैसे कि right to equality है, वो कवर करता है आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 के बीच में. हम आगे जाके भी डिस्कस करने वाले हैं. नेक्स्ट हमारे पास है राइट टू फ्रीडम. राइट टू फ्रीडम डिस्कस करता है हमारा आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 19 टू आर्टिकल 22 के बीच. राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन हमारा डिस्कस करता है, वी हैव आर्टिकल 23 टू 24. राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन वी हैव आर्टिकल 25 टू 28. Next is cultural and educational right. From here we have article 29 to 30. And right against constitutional remedies we have article 32. So what we are going to do, we will be discussing each of these rights one by one and then we will be moving forward. Okay. Now let's see, there are some of the features that are fundamental rights we have. The very first thing is, see, many a times on the features of fundamental rights. ठीक है, पहले how you have to attempt such kind of questions. What will be the features of fundamental rights? पहले तो you have to say that there are 6 fundamental rights. These are all these fundamental rights. अब जो fundamental rights के बाद में हमारे पास आएगा तो उसका पहला feature है, I'm writing it over here. They are absolute. They are not absolute but qualified. But qualified. This is the first feature of our fundamental right. State that, देखो इसका हमने अभी पीछे क्या किया पढ़ा, that state can impose what? State can impose reasonable restriction. So this is another point, you can write it down. They are absolute. By this it means that they are not absolute but qualified. But qualified. Okay. So I hope all the other features ये सब clear होगा. If you have any doubt, अगर इसमें आपके पास में कोई भी doubt है, please let know. Now, okay, अभी आप constitution ने 6 fundamental constitution में कितनी fundamental rights, fundamental rights. But initially जब ये fundamental rights there were 7. Okay, there were rights was by the Indian Constitution and
आर्टिकल 31 जो था हमारा एजुकेशनल राइट्स के बारे में लेकर है, दैट इज property. Okay, now it got 44th Constitutional Amendment Act आया 1978 में, and that kind of time जो property था हमारा ये अबॉलिश कर दिया गया. तो 7 फंडामेंटल राइट्स हो गई, फंडामेंटल राइट्स. Okay, the next thing is, it states, question can be, by which constitutional amendment act, by which constitutional amendment act right to property was abolished. Right to property was abolished. अब ऑप्शंस आपको यहाँ पे क्या याद रखना है? The answer will be 44th Constitutional Amendment Act. Many a times we got confused it with by 42nd CA, but it is not that. The answer is 44th Constitutional Amendment Act. Okay. Now, note over here is written. Just let me clear it so that you guys can see it properly. See, over here the note is written. It states that Article 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25 till 28 ये दोनों सिटीजन्स और फॉरेनर्स को क्या है अवेलेबल, इसके पास अवेलेबल है सिटीजन्स और फॉरेनर्स के पास. फॉरेनर्स की किसकी बात हो रही है? जो इंडिया में अभी या तो टेम्परेरी पीरियड के लिए रिजाइड कर रहे हैं या फिर इंडिया में ट्रैवल पर्पस से आए. ठीक है, तो आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 28 जो है, 14 यहाँ पे बीच में हमारा 15, 16, 17, 18, 19 के अलावा 14 to 28 except 15 to 19 all are available to citizens and foreigners. All are available to whom? To citizens as well as foreigners. But I have told you that not all rights are given to foreigners. Some are exclusively reserved for citizens. So Article 15, 16, 17, 18, 19, 29, 30 and 32, all these are what? They are exclusively reserved for Indian citizens. Okay. So you can get a question, which among the following rights are given to citizens or are available to citizens as well as foreigners, are available to citizens as well as foreigners. Okay, so this type of question you can easily expect. See, fundamental right is one of the topic जहां से जो questions हैं, they are asked every year. Okay, it is not something कि एक बार इसको skip कर देंगे फिर ऐसा नहीं है. This topic is constant. It is evergreen. Important है. You can expect 4 or 5 questions from a particular segment from. Okay, यहाँ से आपको पॉलिटी में 4 or 5 questions आराम से मिल. नेक्स्ट इज राइट टू इक्वालिटी. सी, अभी हमने यहाँ पे अपना डिस्कस किया था कि कितने जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको गारंटी की. कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें 6 फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, 7 थे, बट राइट टू प्रॉपर्टी 44th सीए के जब हमारा आया उसमें हमने उसे अबॉलिश कर दिया. ओके, नाउ वी विल बी डिस्कसिंग दीज 6 राइट्स और इनके अंदर की जो सब राइट्स. टुडे वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द राइट्स. In upcoming lectures we will discuss them in detail कि किसके टाइम पे कौन सा अमेंडमेंट आया, कौन कौन से पर्टिकुलर केसेस थे जो इंपॉर्टेंट थे, जो जजमेंट्स थे जो इंपॉर्टेंट थे. ओके, सो नाउ वेरी फर्स्ट थिंग वी हैव ओवर हियर इज राइट टू इक्वालिटी. राइट टू इक्वालिटी कवर करता है हमारा आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 के बीच. ओके, दिस इज व्हाट आर राइट टू इक्वालिटी covers. It covers from article 14 to article 18. Okay,
सो राइट टू इक्वालिटी के अंदर हमारे पास ये 5 राइट्स हैं. ओके, दीज 5 राइट स्टेट्स व्हाट. सी आर्टिकल 14 में हमारा गिवन है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ. Layman languages में if I have to tell you, equality before law states that every person is equal before the eye of law and equal protection of law. Everyone will get equal protection of law. Okay. Now, next article 15 बोलता है right against discrimination. You cannot discriminate any person on the basis of race, religion, caste, sex, place of birth. Okay. This is what article 15 states. अब article 16 states equality of opportunity in the matter of public employment. Okay. पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के बेसिस पे भी आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है. ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेट्स एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी. अनटचेबिलिटी का एबॉलिशन, यू हैव टू एबॉलिश अनटचेबिलिटी. ओके, यू कैन नॉट प्रैक्टिस अनटचेबिलिटी इन इंडिया, इट इज अ पनिशेबल ऑफेंस. आप इंडिया में प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो क्योंकि वो क्या है, एक पनिशेबल ऑफेंस है. इट इज अंडर आर्टिकल 17. Now, Article 18 states abolition of titles. Abolition of titles का मतलब क्या है कि आप अपने नाम के आगे किसी भी तरह का टाइटल अदर देन मिस, मिस्टर, मिसेज, इनके अलावा या फिर जो भी आपने नेशनल अवार्ड विन किया है जैसे कि पद्मश्री, पद्म भूषण, अपार्ट फ्रॉम दैट मिलिट्री टाइटल्स जो आपको मिलिट्री में मिलते हैं जैसे कर्नल, जनरल, उसके अलावा यू कैन नॉट पुट एनी अदर टाइटल इन फ्रंट ऑफ योर नेम. ओके, नेक्स्ट कम्स राइट टू फ्रीडम. राइट टू फ्रीडम हमारा कौन से आर्टिकल से, 19 से 22 के बीच में है. कवर्स आर्टिकल 19 टू 22. तो राइट टू फ्रीडम के पास हमारे पास क्या है, फर्स्ट इट स्टेट्स, फर्स्ट है प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ व्हाट, रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच. फ्रीडम ऑफ स्पीच के रिगार्डिंग आपके पास कुछ राइट्स हैं जो आपको प्रोटेक्ट करती है. लाइक आप जो है आप कहीं पे भी खड़े होकर कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है, but there are certain reasonable restrictions. Certain reasonable restrictions. Okay. Just give me a second. Yeah, there are certain reasonable restrictions. Next come Article 20. It states protection in respect of conviction of offences. अगर किसी भी पर्सन ने एक पर्टिकुलर टाइम पे एक क्राइम किया है, जैसे कि आज कोई इंसान है, लेट दिस पर्सन ए, ये किसी और पर्सन बी के घर में गया और उसने क्या किया, उसने वहां पे थेफ्ट हुआ, ठीक है, उसने वहां पे चोरी की. दैट डजंट मीन कि अगर इसको एक बार क्या हुआ, इसको एक बार उस चीज के लिए सेंटेंस हो गया, फॉर एग्जाम्पल 1 and 2 years का जितने भी टाइम का सेंटेंस था उसको मिल चुका, बट दैट डजंट मीन कि इसी सेम थेफ्ट के लिए उसको क्या होगा, दोबारा से अगेन उसको सेंटेंस किया जाएगा. इट कैन नॉट हैपन. मतलब अगर आपने कोई क्राइम किया है और आपने आपको उस चीज के लिए क्या हुआ, आपको उस चीज के लिए वो सजा मिल चुकी है, देन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम दिस राइट आर्टिकल 20 के अंदर जो है हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है कि उस सेम चीज के लिए हमें दोबारा क्या हो, दोबारा सेंटेंस नहीं हो. ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि अगर आप दोबारा करोगे तो भी नहीं होगा क्योंकि पहले कर चुके हो. नो, इट इज फॉर दैट वन टाइम. अगर पहले किया है और उस टाइम पे उस चीज के लिए आपको पनिशमेंट मिल गया है तो वो दोबारा नहीं होगा. नाउ it has certain parts in it. We will discuss it. We will discuss all these rights in detail in the upcoming classes. One by one we will discuss all these rights, so don't worry about that. Next come protection of life and personal liberty. Protection of life, right to life भी बोलते हैं हम इस article को, article 21 को. Just a second, let me just clear off all this. Yeah, so article 21 is also known as what? Right to life. Is also known as right to life. Next, protection against arrest and detention in certain cases. It states protection against what? Against arrest or detention के cases में. Next है right against exploitation. अब right against exploitation हमारा कौन से आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 23, 24. अब against exploitation, अब देखो इसके अंदर हमारे पास दो मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट्स आती है. पहला तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग से रिलेटेड है. ओके, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन एंड फोर्स्ड लेबर. ओके, आप किसी को भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग में फोर्स नहीं कर सकते, फिर फोर्स लेबर के लिए नहीं कर सकते. इट इज अ पनिशेबल ऑफेंस. नेक्स्ट कम्स prohibition of children in factories, prohibition of employment of children.
डेंजरस फैक्ट्रीज में क्या है, बच्चों का काम करना प्रोहिबिट है, बिलो द एज ऑफ व्हाट, बिलो द एज ऑफ 14. So this is what, it is also a punishable offense. नेक्स्ट है हमारे पास राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन. राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन का मतलब क्या है? फ्रीडम ऑफ रिलीजन. You can pursue any religion that you want, you can propagate that religion, you can practice that religion. So the same thing is mentioned in our article 25. It states freedom of conscience, propagation, practice of religion, practice and profess of religion. Okay, you are free. आप किसी भी चीज में बिलीव कर सकते हो अपने कॉन्शियसली, प्रोपगेट कर सकते हो उस पर्टिकुलर रिलीजन को, प्रैक्टिस कर सकते हो उसे, ठीक है. आर्टिकल 26 स्टेट्स व्हाट, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन हमारा कौन से आर्टिकल को कवर करता है? आर्टिकल 25 to 28. ओके, नाउ नेक्स्ट इट स्टेट्स फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स. वी हैव द राइट टू मैनेज आवर रिलीजियस अफेयर्स. ये कहाँ पे गारंटीड है हमें? आर्टिकल 26 के अंदर. आर्टिकल 27 स्टेट्स व्हाट, फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्स फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन. किसी भी एक पर्टिकुलर रिलीजन के प्रमोशन के लिए हम टैक्स नहीं पे करेंगे. सी व्हाट हैपन इन आवर कंट्री, द टैक्स वी पे व्हाट इट इज, एज वी नो दैट इंडिया इज व्हाट, वी आर अ सेकुलर नेशन. सो जितना भी हमारा जो टैक्स आता है वो एवरी रिलीजन के अपलिफ्टमेंट के लिए इक्वली यूज होता है. ओके, एवरी रिलीजन अपलिफ्टमेंट के लिए यूज होता है. ऐसा नहीं है कि इफ आई एम अ पर्टिकुलर, फॉर एग्जांपल आई एम हिंदू, तो मेरा जो टैक्स है वो सिर्फ हिंदू रिलीजन को प्रमोट करने के लिए जाएगा. एंड दैट इज नॉट ट्रू. ओके, नाउ आर्टिकल 28 स्टेट्स व्हाट, इट स्टेट्स दैट freedom as to attendance at religious instruction or religious worship in certain educational institutions. कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, सी यहाँ पे हम तीन अलग अलग तरह के केसेस डिस्कस करेंगे. पहले the educational institution which are maintained by state, next which are administered and maintained by state, and the educational institution which receive aid by state. Okay, यहाँ पे हम तीन तरह के केसेस डिस्कस करेंगे. but by this it means कि that in any educational institution, ऐसा नहीं है कि आप किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जाओगे एंड इन दैट पर्टिकुलर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन यू आर अलाउड टू फॉलो अ पर्टिकुलर रिलीजन. नो, द थिंग इट स्टेट्स इज कि इफ देयर इज एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन व्हिच इज मेंटेन्ड बाय द स्टेट, देन देयर विल बी नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इन दैट. ओके, इट इज डिपेंडिंग ऑन, फॉर एग्जांपल जैसे कि सेंट स्टीफेंस कॉलेज. सेंट स्टीफेंस कॉलेज इज व्हाट, इट्स अ क्रिश्चियन कॉलेज, पर्टिकुलरली क्रिश्चियन कॉलेज है, ठीक है. तो वहां पे वो जो फॉलो करते हैं दैट इज व्हाट, क्रिश्चियनिटी. ओके, सिमिलरली इफ आई टॉक अबाउट दारुल उलूम, इट इज व्हाट, इट इज अ मुस्लिम इंस्टीट्यूट, इट्स अ मुस्लिम कॉलेज, ठीक है. तो इट इज व्हाट, अलग अलग इट स्टेट्स दैट राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन का मतलब है कि अगर इफ देयर इज एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, सो वहां पे कोई भी रिलीजियस इम्पार्टेशन, कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इम्पार्ट करना इट इज नॉट अलाउड. एंड इफ इट इज मेंटेन्ड होली बाय द स्टेट. ओके, नाउ वी विल आल्सो टॉक अबाउट कि अगर कुछ ऐसे स्कूल्स हैं जो कुछ पर्टिकुलर रिलीजियस वाइज ही बनाए गए, कोई रिलीजियस कम्युनिटी ने ही एस्टैब्लिश किया है, तो वहां पे वो चीज फॉलो होनी, इट इज ऑब्वियस, वहां पे वो चीज फॉलो हो सकती है. यू कैन गिव रिलीजियस इंस्ट्रक्शन ओवर देयर. ओके, जैसे कि इन मुस्लिम्स दे टीच एट मदरसास. ओके, तो वहां पे सिर्फ ओनली मुस्लिम्स आर अलाउड. सो दिस इज व्हाट दिस आर्टिकल मीन. नाउ नेक्स्ट कम्स कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट. अब कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट में हमारे पास दो तरह की राइट्स हैं. पहले कौन से आर्टिकल को कवर करता है? आर्टिकल 29 to 30. अब इसके अंदर हमारे पास दो राइट है. फर्स्ट इज प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज. इंटरेस्ट जो माइनॉरिटीज हैं उनका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना पहला. नेक्स्ट है कि जो माइनॉरिटीज के पास में राइट है कि वो क्या कर सकते हैं, वो एडमिनिस्टर कर सकते हैं, एस्टैब्लिश कर सकते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स. दे हैव द राइट, they can administer their educational institute and they can also establish the educational institute. Now last but not the least we have right to constitutional remedies. अब ये right जो है it is known as the heart and soul of Indian constitution. Why so? Because ये जो constitutional remedies है, देखो यहाँ पे लिखा ही क्या है, constitutional remedy.
ऑल द रेमेडीज का मतलब क्या होता है? सॉल्यूशंस। तो अगर किसी भी पर्सन का कोई भी फंडामेंटल राइट क्या हुआ है, वायलेट हुआ है, ही कैन मूव टू कोर्ट, he can move to court. It provides us certain writs. ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है, इसके अंदर हमारे पास क्या है? इट गिव्स अस सर्टेन रिट्स, और उन पर्टिकुलर रिट्स के अंदर क्या दिया हुआ है? वो रिट्स किस लिए हैं? वो रिट्स है हमारी कन्वीनियंस के लिए, कि अगर हमारी कोई पर्टिकुलर पर्सन है, फॉर एग्जांपल उसको कोई पब्लिक ऑफिस में वो गया और वहां पे पब्लिक ऑफिस में वो पर्टिकुलर फंक्शन नहीं हुआ जो वहां पे होना चाहिए, देन ही कैन गो टू कोर्ट सेइंग दैट माय दिस पर्टिकुलर राइट इज वायलेटेड। ओके, देयर इज दिस, ये जो पब्लिक ऑफिस है, इट इज नॉट फंक्शनिंग। सो ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के लिए हमें दिया गया आर्टिकल 32। इसके अंदर सर्टेन रिट्स है जो कि हमारे लिए प्रोवाइडेड है, एंड वी कैन मूव टू कोर्ट बाय सेइंग दैट हमारा जो फंडामेंटल राइट है ये वायलेट किया गया है, एंड देन कोर्ट विल व्हाट, देन सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट जहां पे भी वो गया है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वो बोलेंगे कि हाँ, दे विल व्हाट, दे विल ask that particular office या फिर ask that particular person कि आपने अगर कोई पब्लिक ऑफिस के रिगार्डिंग है तो वो उनको क्या करेगा, समन करेगा, एंड ही विल, द सुप्रीम कोर्ट विल आस्क, इट विल आस्क दैट पर्टिकुलर ऑफिस ऑफ दैट गवर्नमेंट ऑफिस दैट व्हाई यू आर नॉट फंक्शनिंग। अगर कोई जजमेंट है किसी लोअर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का या फिर किसी और लोअर कोर्ट का, देन दैट कैन आल्सो बी व्हाट, दैट कैन आल्सो बी टेकन इनटू कंसीडरेशन बाय द राइट्स दैट आर प्रोवाइडेड बाय आर्टिकल 32। अब देखो, अभी हमने डिस्कस कर लिया अपना आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 32 के बीच। ओके, इसके बीच में हमने एक आर्टिकल डिस्कस नहीं किया, दैट वाज आर्टिकल 31 जो था राइट टू प्रॉपर्टी, क्योंकि अब वो क्या हो गया है, वो रिपील हो गया है, वो हमारे फंडामेंटल राइट्स का पार्ट नहीं है, तो हम इसको इसके सब्सिक्वेंट पार्ट में डिस्कस करेंगे। अब आई हैव टोल्ड यू, यहाँ पे देखो जो वेरी फर्स्ट स्लाइड में इट वाज रिटन ओवर हियर दैट फंडामेंटल राइट्स कवर आर्टिकल 12 टू 35। आर्टिकल 12 से 35 के बीच में फंडामेंटल राइट्स जो है वो कवर करती है। नाउ बट वी हैव डिस्कस्ड फ्रॉम आर्टिकल 14 टू 18, so now let's move forward to this article 12 and article 13. What does this particular article states? See, article 12 जो है, this particular article 12 यहाँ पे हमारे पास है, फंडामेंटल राइट्स में कवर करते हैं हम आर्टिकल 12 टू 35। आर्टिकल 12 में गिवन है हमारे स्टेट की डेफिनेशन। What it states, the definition of state. State का मतलब क्या है, ये हमारे इस आर्टिकल नंबर 12 में given. Okay, so if there is any question that what is mentioned in article 12, it states what? It states definition of state. तो ये क्या बताता है हमें? It states that जो state है उसमें क्या include हो रहा है? Government, Parliament of India, government and legislature of each state, and local authorities and other authorities within the territory of India or under the control of the government of India. See, स्टेट के अंदर वो हर एक बॉडी आती है, वो हर एक गवर्नमेंट बॉडी आती है जो क्या है, जो पार्ट है या फिर जो कंट्रोल में है। किसके कंट्रोल में है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल में है। क्या क्या आएगा इसके अंदर? इसके अंदर पहले आएगा हमारा यूनियन गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट का पार्ट्स क्या है? यूनियन गवर्नमेंट का पार्ट है हमारा पार्लियामेंट, जिसमें हमारे कौन से 2 हाउसेज हैं, राज्यसभा एंड लोकसभा। उसके बाद में आएगा हमारा स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट में हमारा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। नेक्स्ट है लोकल अथॉरिटीज, पंचायत, म्यूनिसिपैलिटीज, पंचायत एंड ऑल द अथॉरिटीज जो कि स्टैट्यूटरी है नेचर में, ठीक है, स्टैट्यूटरी या फिर नॉन स्टैट्यूटरी बॉडीज, स्टैट्यूटरी और नॉन स्टैट्यूटरी बॉडीज। नॉन स्टैट्यूटरी बॉडीज किसके कंट्रोल में होनी चाहिए? वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल में होनी चाहिए। इसके अंदर हमारे एग्जांपल में हम लिख सकते हैं जैसे कि ओएनजीसी है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन हमारा, उसके अलावा हमारे पास एलआईसी है, लाइफ इंश्योरेंस। ऑल दीज आर व्हाट, ये जितने भी हैं, ऑल दीज कम अंडर आवर स्टेट, ऑल दीज कम्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ आवर स्टेट अपार्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो व्हाट इज स्टेट? स्टेट इज ऑल द गवर्नमेंट बॉडीज एंड ऑल द सब्सिक्वेंट बॉडीज जो किसके कंट्रोल में है? हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल में। आर्टिकल 12 के अंदर वो सब आए। आर्टिकल 12 विल कवर ऑल ऑफ दिस फ्रॉम पंचायत, ब्लॉक्स, म्यूनिसिपैलिटीज टू
our state government, and after that what happened? State government या फिर हमारा parliament. Okay, ये सब हमारा किसके अंदर आएगा? All this will come under what? All this will come under our Article 12. That is our state. Okay, so this is all we have for today's class. कल से हम अपना आर्टिकल 13 से अपने further articles discuss करेंगे. Tomorrow's class is one of the most important class because we will discuss the most important topic again. Fundamental rights के अंदर एक बहुत important topic है हमारा, that is basic structure. Basic structure. हमारे constitution के अंदर जितने भी laws formulate होते हैं, basic structure is like a moral compass कि हमें उसे violate नहीं करना. So tomorrow we will be discussing our article 13. जिसमें basic structure हम discuss करेंगे. That's all for today. All the rights which I have taught you today, you have to keep in mind the articles because आपके exam में जो important है, as we know that the nature of our exam is factual. So हमारे exam के लिए articles बहुत important. Articles, they are the most important, especially fundamental rights and DPS, जो major important articles है. Office of President, Prime Minister, ये जो आर्टिकल्स हैं ये हमारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं क्योंकि इनसे हम जो क्वेश्चन एक्सपेक्ट करते हैं दैट विल बी ऑफ इट इज मैच इन नेचर. ओके, मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में हम इनको एक्सपेक्ट करते हैं और उसी फॉर्म में क्या होता है, व्हेन वी गेट क्वेश्चंस इन मैच दे गेट कंफ्यूजिंग. नाउ नेक्स्ट थिंग वी कैन आल्सो गेट इन स्टेटमेंट्स. स्टेटमेंट्स में आपके पास एक आर्टिकल होगा, फॉर एग्जांपल दे विल से दैट आर्टिकल 14 टॉक्स अबाउट द राइट ऑफ माइनॉरिटीज. अगेन इट इज अ इनकरेक्ट स्टेटमेंट, so you can get such questions as well. So this is all we have for our today's class, and tomorrow we will start with article 13. Okay, article 13 से हम कल start करेंगे. We will talk about basic structure and our fundamental rights. Okay, keep revising, keep studying. That's all for today. I'll see you guys tomorrow.